My lovely students, welcome to Mathological. In this session, we'll be doing a 2025 decision-making set, but before starting that set, we'll be understanding the nuances of decision-making section, how to take a right decision, and what should be the process of elimination. तो एक framework short में discuss करेंगे 2-4 मिनट में, and then we'll be straight away jumping to the decision-making set. चलो start करते हैं सेशन को. And if you're not already subscribed to the channel and you like the content, then make sure to subscribe to the channel और साथ में इस सेशन को भी like कर देना. चलो start करते हैं. So basically, in any decision-making question, you'll be getting a case. ठीक है, and that case will be presented initially in a passage, introductory passage में you will be presented a case. There will be some relevant information in the introductory passage, in the introduction that will be given for that case. Then after that introduction, you will be given questions. So there will be, let us say, one question. There will be a question stem followed by 5 decision options, and you will have to choose which option among the given options is the right option. ठीक है, so हमें क्या करना होगा? We will have to read the question stem as the most important part to answer that particular decision making choice, to take that particular decision making choice. The most important part is question stem. But since in every question there will be a case, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में बेसिकली जनरली 3 क्वेश्चंस का सेट होगा और उसमें एक केस दिया होगा, तो जो केस का इंट्रोडक्शन है हमारा, दैट विल बी गिविंग अस सम स्टोरी, and that story will be having some stakeholders. Stakeholders यानी कि जिनको फर्क पड़ता है, जिनका स्टेक है उन डिसीजंस में, तो वील हैव टू आइडेंटिफाई दोज स्टेक होल्डर्स एंड देन वी हैव टू टेक द क्वेश्चन स्टेम फॉर ग्रांटेड. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड अकॉर्डिंगली हमें आंसर करना पड़ेगा. क्वेश्चन स्टेम विल बी गिविंग अस डायरेक्शन टू मेक अ डिसीजन. अब डिसीजन क्या होगा? वट एवर डिसीजन यू आर गोइंग टू टेक, दैट डिसीजन शुड बी अ रेलेवेंट डिसीजन. ठीक है, रेलेवेंट होना चाहिए, यानी कि जो आंसर ऑप्शन है हमारे, दैट शुड बी रेलेवेंट टू द क्वेश्चन स्टेम. रेलेवेंट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए. जो क्वेश्चन कह रहा है वो काम कर रहा होगा, जो ऑप्शन वो चूज करेंगे, तो रेलेवेंट हो, इफेक्टिव हो. ठीक है, एज सर्टेन एज पॉसिबल हो. ठीक है, सर्टेन होना चाहिए, एज फार एज पॉसिबल. ठीक है, बहुत अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम इसी के बेसिस पे एलिमिनेशन भी करेंगे. तो हमारा राइट डिसीजन क्या होगा? दैट विल बी रेलेवेंट टू द क्वेश्चन गिवन, इफेक्टिव टू द क्वेश्चन गिवन. इफेक्टिव होगा, उस डायरेक्शन में जा रहा होगा, वो पर्पस फुलफिल कर रहा होगा जो क्या सिस्टम कह रहा है. सर्टेन होना चाहिए, एज फार एज पॉसिबल. ठीक है, तो दैट विल बी सर्टेन. ओके, और साथ में प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, फीजिबल भी होना चाहिए, उसको करना भी, इफेक्टिवली करना भी प्रैक्टिकल होना चाहिए. सो इट शुड बी रेलेवेंट, इट शुड बी इफेक्टिव, इट शुड बी प्रैक्टिकल एंड सर्टेन एज फार एज पॉसिबल. और साथ में एथिकल भी होना चाहिए इन मोस्ट केसेस. ठीक है, सो इट शुड बी रेलेवेंट, इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल. अब इसी के बेसिस पे विल बी डूइंग एलिमिनेशन, क्योंकि राइट डिसीजन चूज करने से पहले हमें रॉन्ग डिसीजन को रिमूव करना पड़ेगा. विल नॉट बी एक्चुअली चूजिंग अ राइट डिसीजन, विल एक्चुअली बी एलिमिनेटिंग रॉन्ग आंसर्स. तो एलिमिनेशन कैसे करोगे? इफ ऑप्शन इज इररेलेवेंट तो उसको एलिमिनेट करेंगे. इररेलेवेंट, इनइफेक्टिव, एलिमिनेट होगा. अनसर्टेन होगा, एलिमिनेट होगा. इम्प्रैक्टिकल होगा, एलिमिनेट होगा. और इम्प्रैक्टिकल साथ में एक्सट्रीम भी हो सकता है, तो एक्सट्रीम ऑप्शंस आर मोस्टली एलिमिनेटेड, बिकॉज मोस्टली क्वेश्चन स्टेम एक्सट्रीम ऑप्शंस के डायरेक्शन में नहीं जा रहा होगा, अनलेस कोई एक्सेप्शनल केस हो, तो वैसे केसेस को भी देखेंगे, बट इस सेट में तो नहीं होगा, बट अदर सेट्स में. तो इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए, इनइफेक्टिव नहीं होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, इम्प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए. ठीक है, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, अनएथिकल भी मोस्टली नहीं होना चाहिए. ओके, तो दिस इज सम बेसिक्स ऑन द डिसीजन दैट वी हैव टू टेक. अब अपना लेते हैं क्वेश्चन स्टेम, पहला सेट लेते हैं, फर्स्ट सेट लेते हैं. सो द सेट इज फ्रॉम Z 2025. स्टार्ट करते हैं सेट को, और पहले तुम क्वेश्चंस को देख के अपने एंड पे ट्राई कर लो. तो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पैसेज, देन फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन. So let us read the introductory passage first. Aarya had always been a mediocre student. Luckily, after finishing her undergrad degree from a Tier 2 engineering college, she secured a decent but modestly paying job at a reputable IT company. However, after a year on the job, Aarya found her role mundane. Mundane यानी कि Monday-like. ठीक है, boring, ordinary, not interesting. When her best friend at the company, Shruti, left to pursue an MBA from a top-tier business school, citing significant career growth and potential salary increase upon graduation, Arya felt intrigued and inspired to follow the same path. Intrigued यानी कि now she is interested, curious about following the same path as Shruti.
Shruti appreciated Arya's aspirations, telling her that doing MBA from a top tier business school could not only land Arya a lucrative job, but also it could fast track her career progression. However, Arya was concerned whether she would be able to balance between her MBA entrance exam preparation and her current job. Arya considered resigning to focus entirely on MBA exam preparation, but Shruti cautioned her that top tier business schools might view a career break unfavorably as they prefer continuous प्रोफेशनल एंगेजमेंट। तो यहाँ पे क्या क्या बातें हमने देखी कि आर्या इज अ मीडियोकर स्टूडेंट, शी इज अ मीडियोकर स्टूडेंट एंड लकीली आफ्टर फिनिशिंग द अंडरग्रेड फ्रॉम टॉप tier 2 college she secured a decent job. So decent modestly paying job she has already secured. So mediocre secured a decent job, but now she is finding her role mundane, ordinary, not interesting. And Shruti, her friend, is pursuing an MBA from a top tier business school, citing significant career growth and potential salary increase. Now Arya is also feeling intrigued and inspired for the same path. So Shruti appreciated Arya's aspirations. Aspirations क्या है आर्या की? That aspirations are significant career growth. So career growth is the aspiration. Okay. And so for that, she wants to do MBA from a top tier business school also. But the point is, Arya is concerned about whether she would be able to balance between her MBA entrance exam preparation and her current job. So that is her concern, balancing the MBA prep and current job. And for that, she wants to leave the job, but Shruti ne kya kaha? Shruti has cautioned her that she should not take a career break because that will be seen unfavorably by top tier business schools. So this is our introduction. Okay. अब अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं. So first question is, the CEO of Arya's IT firm tied up with a premier business school to reserve 30 seats in an online management certificate program aimed at grooming working professionals. So CEO of the IT firm of Aarya, he has tied up with a premier business school to reserve 30 seats in an online management certificate program. The CEO, however, declared that the employees participating in this program will have to sign a 3-year bond with the firm. So एक 3 year का bond sign करना है for that certificate program. So that bond is also there. Further, the CEO added that good performance was a criteria for selection. He would hold authority to take a final call. So good performance is a criteria, but he would hold a final call. Arya, well aware of her academic limitations, was unsure about the time available to prepare for the MBA entrance exam preparation because she is going to work now. So अपना job leave नहीं करेगी, तो she is concerned कि she knows her academic limitations. She has been a mediocre student, average student, so unsure about the time available, whether she will be able to prepare for the entrance exam or not. So she thought about going for the management certificate program instead of preparing for the MBA entrance exam preparation. So she is contemplating whether to go for certificate program or prepare for the MBA entrance exams. Which of the following considerations will best help Arya decide whether to apply for the online management certificate program? तो यहाँ पे हमारा कंसर्न क्या है? क्वेश्चन स्टेम क्या कह रहा है? क्वेश्चन स्टेम कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशन, जो गिवन कंसिडरेशन है इनमें से कौन सा कंसिडरेशन ऐसा होगा विच विल बेस्ट हेल्प आर्या डिसाइड वेदर टू अप्लाई फॉर द ऑनलाइन मैनेजमेंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम. तो as far as Arya is concerned, she is contemplating between two decisions, whether to go for certificate program or MBA prep. These are two choices, whether to go for online certificate program or MBA preparation. And our consideration, our right answer choice should help Arya decide whether to apply for the online management certificate program. So that should help her decide on applying for online management certificate program. Options को read करते हैं. Option A, Arya wants to be a part of a very good alumni network. Option B, Shruti attempted the MBA entrance exam twice before she could get selected. Option C, Arya feels that the online program is light enough to manage while working full time. And option D, Arya keeps getting appreciated for her performance by the HR department. And option E, those who complete this MBA this online management certificate program do well in their career. तो कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा which is best helping Arya decide whether to apply for the online management certificate program? Option A कह रहा है Arya wants to be a part of a very good alumni network. So that is a good thing. She wants to be part of a very good alumni network. But do we have any idea of the alumni network of this particular online management certificate program? पहली चीज तो ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, so यहाँ पे alumni network का बहुत ज़्यादा possibility नहीं है. Even for the other options, the MBA preparation, we have no idea which college she will be choosing, what will be alumni network. So ये जो हमें बात कहा है very great good alumni program, this is aspirational. Arya wants to be, ठीक है, but no information is given. This is uncertain as well. And either way, this is not going to help her decide on applying for online management certificate program. Why? Because even if information was given, so this is not critical either. So critical नहीं है to make that decision.
And this is the most important part, that since this is not critical, so option A will not be the answer. Otherwise भी this is aspirational and uncertain, but critical नहीं है, so this will not be the major part to decide on whether to apply for online management certificate program or not. Okay. क्योंकि इसके आगे का पार्ट भी अनसर्टेन है कि एमबीए प्रेप में होगा, कौन से कॉलेज में जाएगी, वहाँ पे एलुमनाई नेटवर्क कैसा होगा, सो वी हैव नो आइडिया अबाउट दोस थिंग्स. तो दिस इज अनसर्टेन, बट दिस इज नॉट क्रिटिकल फॉर डिसीजन मेकिंग. ऑप्शन बी, श्रुति अटेम्प्टेड द एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन ट्वाइस बिफोर शी कुड गेट सेलेक्टेड. तो श्रुति ने 2 बार एग्जाम दिया, बट वी हैव नो आइडिया वेदर श्रुति वाज अ एक्सीलेंट स्टूडेंट, अ मीडियोकर स्टूडेंट, अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, वी हैव नो आइडिया. तो श्रुति इज अ थर्ड पर्सन. और उसके पर्सपेक्टिव से ऑप्शन बी बात कर रहा है कि श्रुति अटेम्प्टेड द एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन ट्वाइस बिफोर शी कुड गेट सेलेक्टेड, बट वी कैन गेट नो आइडिया अबाउट आर्या विद दिस इंफॉर्मेशन. तो ये थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है, तो इररेलेवेंट फॉर अवर गिवन क्वेश्चन 10, इररेलेवेंट. इज दैट इट? सो ठीक है. ऑप्शन सी, आर्या फील्स दैट द ऑनलाइन प्रोग्राम इज लाइट इनफ टू मैनेज while वर्किंग फुल टाइम. इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दैट शी फील्स दैट द ऑनलाइन प्रोग्राम कैन बी मैनेज्ड while वर्किंग फुल टाइम. तो दिस कैन बी मैनेज्ड. ठीक है, दिस इज सेइंग दैट कैन बी मैनेज्ड. पर ये कब की बात कर रहा है कि इफ शी चूजेज, वंस ही चूजेज एंड गेट सेलेक्टेड, उसके बाद की बात कर रहा है. हमारा कंसर्न क्या है, हमें चाहिए कंसिडरेशन दैट इट हेल्प्स आर्या इन मेकिंग अ डिसीजन टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन मैनेजमेंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम. तो क्या उस डायरेक्शन में बात कर रहा है, अभी होल्ड पे रखते हैं अभी, क्योंकि कुछ नुआंसेस हैं जिनको अभी हमने डील नहीं किया है, डिस्कस नहीं किया है, जो इस क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. वो पार्ट क्या है, दैट पार्ट वाज गिवन इन द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन क्या कह रहा था, मीडियोकर स्टूडेंट है, डिसेंट जॉब मिला, मंडेन जॉब को पा रही है, नॉट इंटरेस्टिंग नाउ, बट एस्पिरेशन क्या है, एस्पिरेशन इज कैरियर ग्रोथ. दैट इज हर एस्पिरेशन. इसलिए तो एमबीए प्रेप करना है, इसलिए तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी करना है, तो इसीलिए करना है. तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एक्चुअली गोइंग इन दैट डायरेक्शन. आउटकम ओरिएंटेड कौन सा है, कि देखो टाइम कहाँ पे कम लगेगा, टाइम कहाँ पे ज़्यादा लगेगा, दैट इज वन थिंग. वो तो एक बात है. ठीक है, पैसा कहाँ कम लगेगा, पैसा कहाँ ज़्यादा लगेगा, दैट इज अनदर थिंग. बट अल्टीमेटली एम क्या है, एम इज कैरियर ग्रोथ. So is that online certificate program going to address that part? If it is going to address that part, then that option is which we should be choosing. और अगर MBA प्रेप वाला डायरेक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा तो फिर हमें उसको चूज नहीं करना पड़ेगा. बट समहाउ दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ये जो आउटकम है हमारा, आउटकम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा कह रहा है कैन बी मैनेज्ड, मैनेज कर सकते हैं, बट आउटकम क्या होगा, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट आउटकम. आउटकम के बारे में बात नहीं कर रहा. ऑप्शन डी, आर्या कीप्स गेटिंग अप्रिशिएटेड फॉर हर परफॉर्मेंस बाय द HR डिपार्टमेंट. तो कीप्स गेटिंग अप्रिशिएटेड. ओके, सो ये कह सकता है कि सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज कर जाएंगे इसके, बिकॉज अल्टीमेटली सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन गुड परफॉर्मेंस, दैट इज अ मेजर क्राइटेरिया. बट सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज करेगा. अगेन डिसाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वेदर दैट विल बी अ राइट ऑप्शन और नॉट. भाई 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास, वन ऑप्शन इज ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम, अदर ऑप्शन इज MBA एग्जाम प्रिपरेशन. ठीक है, सो इफ बोथ आर अनसर्टेन, सो वी विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू चूज बिटवीन दीज टू. कोई भी चूज कर सकते हैं. तो अगर एक डायरेक्शन हमें किसी सर्टेनिटी पे लेके जा रही हो, देन ओनली वील बी एबल टू चूज दैट डायरेक्शन. ऑप्शन ई कह रहा है दोज हु कंप्लीट दिस ऑनलाइन मैनेजमेंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम डू वेल इन देयर कैरियर. तो ऑप्शन ई इज basically stating a fact, a certainty that those who do MBA online, not MBA, online management certificate program do well in their career. So if she does this program, then this ensures career growth. So exactly what she aspires for, ये चीज मिल जाएगा उसको if she completes this online management certificate program. Option E is best among the given options and hence this option must be chosen. ठीक है, ऑप्शन सी और डी फ्यूचर की बात कर रहे हैं. सी इज टॉकिंग अबाउट कि इफ शी इज सेलेक्टेड फॉर द प्रोग्राम शी कैन मैनेज इट. तो फ्यूचर की बात है. ठीक है, बट डिसीजन अभी हमें एट प्रेजेंट किसका लेना है, कि हमें ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रोग्राम चूज करना है या फिर MBA प्रेप को चूज करना है. तो उन दोनों के बीच की डिसीजन जो हमें लेना है, वहां पे ऑप्शन सी इज नॉट हेल्पिंग, सो दैट शुड बी रिजेक्टेड, बिकॉज फ्यूचर की बात कर रहा है. ऑप्शन डी भी फ्यूचर की बात कर रहा है कि शी माइट हैव अ बेटर चांस ऑफ सिलेक्शन बिकॉज शी इज गेटिंग अप्रिशिएटेड. तो फ्यूचर की बात है. बट अभी क्या ये पर्पज फुलफिल करेगा, क्या इफ शी चूजेज ऑनलाइन MBA प्रोग्राम, ऑनलाइन MBA सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, सो विल दैट हेल्प हर इन कैरियर ग्रोथ और नॉट. ये बात सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ई कर रहा है एंड हेंस दैट शुड बी सेलेक्टेड एज द करेक्ट ऑप्शन. क्या ये क्लियर है? ठीक है. ऑल्सो ऑप्शन सी में एक और वर्ड है दैट फील्स, शी फील्स. तो ये फीलिंग है, दिस इज नॉट फैक्ट. ओके, क्या ये बात अप्रिशिएट कर पाए हो, समझ पाए हो कि क्या क्या चीज़ें हमें सोचनी है टू करेक्ट, टू चूज अ राइट डिसीजन और टू एलिमिनेट द चैफ, टू एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर्स. ओके, तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अकॉर्डिंगली आप अगर इस क्वेश्चन में बातें समझ में आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली अपने एंड पे ट्राई करना राइट ऑप्शन चूज करने का.
ठीक है. आफ्टर वर्किंग हार्ड ऑन MBA entrance exam preparation for 1 year, Arya received an admission offer from the 2-year agri-business program for Premier Business School. So she is chosen admission. She has got an admission offer for 2-year agri-business program. While she aspires to be part of that Premier Business School, she had no interest in agri-business. तो कोई interest नहीं है इस program में. While deliberating, she received an offer from a brand new but buzzworthy global 1-year executive MBA program in general management in a mid-tier business school. Okay, so she has got another offer that is from a global 1-year executive MBA program in general management from a mid-tier business school. The program boasted excellent placement for its first batch of students, while the program was typically geared towards students with a considerable industry experience. Being new, it also allowed some exceptions for well-deserving students with little or no experience. ठीक है. Arya was worried whether being a candidate with a minimal experience, she would be good fit in the executive business program. She is worried about being a good fit for that program. Which of the following considerations would best help Arya in taking admission in the 1-year executive MBA program? इस क्वेश्चन में हमें क्या डिसाइड करना है? Which of the following considerations would best help Arya in taking admission in the 1-year executive MBA program? Best help Arya in taking admission. Option A, Arya has a better chance of furthering her career in the field of her interest through the executive MBA program. So question stem was already mentioning that she has been given an admission offer from the 2-year agribusiness program, but that is not her field of interest. She is not interested in agribusiness. And option A is saying Arya had a better chance of furthering her career. Better chance of furthering her career. तो career aspiration तो है ही है, इसीलिए तो ultimately she is doing MBA in a field of her interest through the executive MBA program. So this is a very very win-win option. सारी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, तो ऑप्शन ए को होल्ड पे रखते हैं. If no other option is better than this, then definitely we'll be choosing this option. Okay, because this is definitely helping Arya in taking admission in the 1-year executive MBA program, because that particular option will give her a better chance of furthering her career in the field of her interest through the executive MBA program. That is giving her a better chance. Okay, option B, Arya does not have the confidence to spend another year in the entrance exam preparation. तो अब हिम्मत नहीं बची है. ठीक है, बट अगर हिम्मत नहीं भी बची है तब भी she has 2 offers. अगेन इस क्वेश्चन में क्या है, 2 ऑफर्स हैं. वन इज एग्री बिजनेस प्रोग्राम and the other is this executive program. So she has 2 choices. ठीक है, so whether agri business she has to choose or executive program she has to choose, and either can be chosen if she does not have the confidence. ठीक है, तो ये fear की बात कर रहा है, बट fear के बेसिस पे भी डिसीजन लो, तब भी यहाँ पे 2 choices हैं कि एग्री बिजनेस और एग्जीक्यूटिव. तो कौन सी डायरेक्शन में जाना है? क्या ये एडमिशन एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम में एडमिशन लेने के डायरेक्शन में हेल्प कर रहा है? नहीं हेल्प कर रहा है. ये सिर्फ इतना बता रहा है कि अब now Arya does not want to prepare for another year. She can still choose agri business ना. So definitely option B is not the right option. Eliminate कर दोगे इसको पक्का, क्योंकि ये हमें तभी हेल्प करता है जब इसके बाद ये भी क्लियर होता है कि एग्री बिजनेस नहीं चूज करना है, बट एग्री बिजनेस नहीं चूज करने के डायरेक्शन में ये नहीं जा रहा है. ऑप्शन बी इज एलिमिनेटेड फॉर श्योर. ऑप्शन सी, यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जीक्यूटिव MBA program has gained a lot of attention from the new startups. यूनिक स्ट्रक्चर has gained a lot of attention कहाँ से? फ्रॉम न्यू स्टार्टअप्स. इससे क्या होगा? अब ये दिस ऑप्शन इज बेसिकली नॉइज, अननेसेसरी. क्यों अननेसेसरी है? क्योंकि एक तो न्यू स्टार्टअप्स की बात करें कि वहाँ से नया अटेंशन मिल रहा है, बट इससे आर्या को क्या बेनिफिट होगा? बिकॉज आर्या का एस्पिरेशन क्या है? शी वांट्स गुड कैरियर ग्रोथ. तो विल दिस ऑप्शन हेल्प हर इंश्योर दैट? नो आइडिया अबाउट दैट. ठीक है, अनसर्टेन है, क्योंकि न्यू स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं. नॉट वेल स्टैब्लिश फर्म्स, नॉट वेल स्टैब्लिश एमएनसीज, न्यू स्टार्टअप्स. तो ऑप्शन सी शुड ऑल्सो बी एलिमिनेटेड बिकॉज अनसर्टेन फ्यूचर के डायरेक्शन में बात कर रहे हैं. मे बी जॉब इन न्यू स्टार्टअप्स कैन बी टेकन आफ्टर दिस, बट अल्टीमेटली वो तो हेल्प नहीं करेगा आर्या को. ठीक है, आर्या वांट्स अ सिक्योर एंड प्रॉपर कैरियर ग्रोथ. तो ऑप्शन सी इज नॉट इन दैट डायरेक्शन. ऑप्शन डी, एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम ऑफर्स जेनरस स्कॉलरशिप्स टू वुमेन विद IT एक्सपीरियंस. जेनरस स्कॉलरशिप. So scholarship is a good consideration, but this is not what she desires right now. क्वेश्चन स्टेम हमारा क्या कह रहा है? इन टेकिंग एडमिशन इन द 1-year एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम. कहीं पे भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट तो नहीं है हमारे क्वेश्चन स्टेम में. तो ऑप्शन डी हमारा कह रहा है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट तो फाइनेंशियल ईज हो जाएगा बिकॉज जनरल स्कॉलरशिप मिलेगा, बट वो तो बाद की बात हुआ, जबकि शी इज टेकिंग एडमिशन उसके बाद की बात है. और उसके बाद भी अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हमारे क्वेश्चन में होता तब सोचते, बट क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इज नॉट देयर, तो ऑप्शन डी शुड ऑल्सो बी एलिमिनेटेड. Option E, agribusiness program is not the flagship program of the Premier Business School. Important, not the flagship program. But not the flagship program does not mean this is not a good program. So still, it could be good for career growth. Still can be good for career growth. है कि नहीं? तो फिर भी अच्छा हो सकता है.
Even if option E is right, we can still choose agribusiness program over executive program. तो ऑप्शन ई के सही होने के बाद भी वी आर नॉट गेटिंग इनटू वन डायरेक्शन, बट ऑप्शन ए क्लियरली हमें एक डायरेक्शन में भेज रहा है कि आर्या हैज अ बेटर चांस ऑफ फर्दरिंग हर कैरियर इन अ फील्ड ऑफ इंटरेस्ट थ्रू द एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम. क्लियर डायरेक्शन, ऑप्शन ए मस्ट बी सिलेक्टेड विदाउट अ डाउट. क्लियर है? ठीक है. Next question, last question of this set. After working hard on MBA entrance exam preparation for 1 year, Arya received 2 admission offers. तो 2 admission offers मिले आर्या को. One from the 2-year agribusiness program of the Premier Business School, and other one from a brand new buzzworthy global 1-year executive MBA program in the general management in a mid-tier business school. As she did not have much interest in agribusiness, Arya opted to enroll in the 1-year executive MBA program and promptly submitted her first installment of fees towards admission. She was very happy that she would soon embark on her MBA journey. To her shock, a few days later, she received a call from the authorities of the mid-tier business school. They informed her that due to a technical glitch in the system, more admission offers were made than the available seats. तो available seats से ज़्यादा admission offers उन्होंने दे दिए थे. Okay, so that was due to technical glitch. Okay. Consequently, candidates lower on the merit list, including Aarya, were being offered a choice from the following options: a deferred admission next year to the same program, or a full refund of the fees. So either a deferred admission next year or a full refund of the fees. They also said, if interested, Aarya could right now join a similar program starting in a newly launched campus of the same business school. So that is another choice that they have given, that in a newly launched campus, she can be offered a similar program where many seats are available. Aarya considered the whole episode a breach of trust and wondered if it would at all be worthwhile to be associated with the business school now or in the future. So that is her concern. Which of the following considerations will best help restore her faith in the business school? क्या consideration हमें चाहिए? The option that best helps restore her faith in the business school. That option will be choosing. Option A, the business school owned the mistake and tried their best to help the affected candidates. So yes, there was a technical glitch, and due to that technical glitch, what happened? That there were more offers were given than available seats. So hence, they owned up the mistake, and now they are offering either a deferred admission or a full refund or joining the same program in a newly launched campus. So they are giving the choices. Okay, so definitely they are owning up the mistake and trying their best to help the affected candidates. So option A is definitely worth considering. क्या ये फेथ को रिस्टोर करेगा? बिल्कुल उस डायरेक्शन में तो जा ही रहा है कि दे आर ओनिंग अप द मिस्टेक एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू modify or giving them chances or trying their best to help the affected candidates. So definitely they are doing that. Okay, so mitigating the damage for sure. Option A. Option B, the business school runs many management training programs on ethical leadership in corporates. Option B कह रहा है business school runs many management training programs on ethical leadership. So since they are giving programs on ethical leadership, क्या हम ये conclude कर सकते हैं that they are ethical, or will it help in restoring the faith? So teaching is not same as practicing. ठीक है, teaching is a different thing. Practicing the same thing is different thing. Teaching is not equivalent to practicing. Option B is definitely incorrect. Option C, a similar incident happened 3 years back in another business school and all deferred candidates got good placements. तो option C क्या कह रहा है कि if she instead, because same incident happened in another business school and all deferred candidates eventually got good placements. So option C कह रहा है कि deferment, if she goes for the deferment choice कि a deferred admission next year, then she can get a good placement. But हमारा डिसीजन ये नहीं है. क्वेश्चन का कंसिडरेशन क्या है? दैट कंसिडरेशन दिस टाइम इज बेस्ट रिस्टोरिंग द फेथ इन द बिजनेस स्कूल. तो ऑप्शन सी इज नॉट इन दैट डायरेक्शन. ठीक, ऑप्शन सी इज टॉकिंग अबाउट डिफर्ड एडमिशन. ठीक है, फेवरेबली अबाउट डिफर्ड एडमिशन. तो दैट इज गुड with option C, but the point is हमारा consideration है to restore the faith in the business school. Option C is not working in that direction, so this should be eliminated. Irrelevant है. Option B भी irrelevant ही था, because ये बात किसकी कर रहा है कि they teach, they give training programs on ethical leadership, but are they ethical or not? We are not sure. Option D, a deferment by a year will give her a chance to build on her work experience. Again बात कर रहा है कि deferment will help her in her career growth, but the point is क्या ये faith restore करेगा? नहीं करेगा. Option D irrelevant again. Option E, many mid-tier business schools give offers to more candidates than available seats to tackle rejections. So many schools do that, यानी कि this is, even if this is practice, does not make it right. ठीक है, होता है, चलता है, दुनिया है, but the point is this does not make it right. So this does not restore her faith. So option E is also eliminated for sure. So only one option is correct in that case. Option A is clearly the winner.
that business school owned up the mistake and tried their best to help the affected candidates, and hence this is definitely helping in restoring the faith. तो ऑप्शन ए will be the right answer. ठीक है. और in organizational behavior in general, owning up the mistake, that is the first step towards taking accountability. बिकॉज और भी केसेस मिलेंगे और भी क्वेश्चन होंगे जहाँ पे कि हमें इस चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा. तो इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर यू मस्ट रिमेंबर दैट इफ यू मेड अ मिस्टेक, ओनिंग अप द मिस्टेक इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स टेकिंग अकाउंटेबिलिटी. So this was our first set from 2025 XAT Decision-Making. एंड आई बिलीव कि इस सेट में जो भी चीज़ बातें डिस्कस करनी थी, जो भी नुएंसेस डिस्कस करने, जो भी डायमेंशंस देखने थे, वो हमने सारे के सारे डायमेंशंस देखे हैं और तुम्हें डेफिनेटली सॉल्यूशंस में समझ में आई होंगी चीज़ें, ताकि आगे के सेट्स में यू विल बी एबल टू कॉन्फिडेंटली हैंडल द अदर सेट्स एज वेल. सो इन नेक्स्ट सेशन विल बी डिस्कसिंग द अदर सेट्स ऑफ द सेम एग्जाम पेपर. स्टार्ट करते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट सेट में क्या खोल रहा हूँ मैं. ठीक है. चलो इस सेशन में इतना ही रखते हैं और आई बिलीव कि सेशन तुम्हें पसंद आया होगा. और that's all for this session. Bye bye. Take care. Keep learning. On next session, we'll be doing some more decision making sets. Take care. Keep learning.